Good morning, class. Today we will study Geography, Chapter 1, Class 6. Now we will start with definition of universe. Universe in Hindi it is known as Brahmand. As you can see in the picture, there are different celestial bodies that are spread in the universe. So, in simple term, universe is all of space and time and their content, including planets, stars, galaxies and other forms of matter and energy. ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहाँ ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं और दूसरे मैटर्स या भौतिक वस्तुएं लाइक रॉक्स उन्होंने स्थान घेर रखा हुआ है. इन लैटिन वर्ड्स यूनिवर्स इज नोन एज यूनिवर्सस. नाउ द मैटर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? Anything that occupies space having mass or weight is known as matter. So once again, the universe is all of space and time and their contents, which include planets, stars, galaxies and other forms of matter and energy. Now we'll move further. Most of the scientists, they have told that universe is derived from theory known as Big Bang theory. Big Bang theory states about formation of universe. Big Bang theory जो है वो बताती है कि किस तरीके से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, किस तरीके से ब्रह्मांड बना. So a Big Bang theory, a theory that states that the universe began to expand with the explosion of concentrated matter and energy. Big Bang theory के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई जिसमें बहुत सारे मैटर और एनर्जी का निस्तारण हुआ या वो बाहर निकले. As you can see in the figure. Students, after the Big Bang, the force of gravity began to affect the matter shooting outwards in every direction. So, when the Big Bang happened, when the blast has happened, the force of gravity began to affect the matter. It charged them to spread in outward direction. विस्फोट होने के बाद में ब्रह्मांड जो एक रॉक से बहुत सारे रॉक्स में बदला, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी से इतना फोर्स एग्जर्ट हुआ कि जो रॉक्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर गए. दे स्प्रेड आउटवर्ड इन एवरी डायरेक्शन. नाउ द एक्सप्लोजन टुक प्लेस अबाउट 14 बिलियन ईयर्स एगो. ये बहुत पहले की बात है जो एक्सप्लोजन हुआ, जो बिग बैंग थियरी हमें बता रही है यहाँ, बहुत वर्षों पूर्व. The fastest moving matter traveled, now here double L should be there, traveled the farthest distance away. As you can see in the picture, when if you see from the light, our left hand side, there is a blast, there is a energy or complete brightness. And towards our right hand side you can see different galaxies, planets, they are spreading
in opposite direction. So this was Big Bang expansion. Big Bang expansion, फैलना, विस्तृत होना, ब्रह्मांड में चारों तरफ फैलना, हर दिशा में. So you can see from the figure also, this was the Big Bang theory explanation. ये माना गया है, इसको प्रूव नहीं किया गया है, ये एक अनुमान लगाया है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ऐसे बना होगा. ठीक है, ये थ्योरी दी गई है, मतलब ये सिद्धांत है, किसी ने सोचा है, समझ के साइंटिस्ट ने ये बताया है. ग्रेविटी बिगेन टू पुल मैटर इनटू क्लम्प्स आफ्टर स्प्रेडिंग them in all direction. Gravity began to pull matter into clumps. जो मैटर बिखरे पड़े थे, छोटे छोटे रॉक्स, वो क्या हुए, आपस में इकट्ठा हुए, ग्रुप में आए. They form clumps. Gravity is a force of attraction between the objects. Now as we know, gravity is the force which attract the things towards it or towards the center of mass. So the small rocks, they are coming together, they are formed clumps because of gravity. These clumps formed huge clusters which became galaxies of the universe. Galaxies of the universe. Small rocks, gases, they accumulated. Rocks, gases, धूल के कण एक साथ आए और उन्होंने क्या किया, गैलेक्सी फॉर्म की in the universe. Now the galaxies are moving away from the center of the universe. These galaxies, when they came together, they form a group that is known as galaxies. They spread into different directions from the center. So this was the Big Bang theory. Just revising Big Bang theory before celestial bodies. The Big Bang is currently the most accepted theory which explains the origin of universe. अब तक की जो एक्सेप्टेड मानी गई थ्योरी है, सिद्धांत है कि ब्रह्मांड कैसे बना, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी. दिस एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट एक्सप्लोडेड. ऐसा माना गया कि एक पॉइंट रॉक का वो एक्सप्लोड हुआ एंड ऑल द मैटर इट कंटेंड वॉज थ्रोन आउट इनटू स्पेस. एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, विस्फोट के बाद में वो रॉक, बहुत सारे छोटे टुकड़ों, रॉक्स, धूल के कण, इसमें डिवाइड हो गई और ये पूरे स्पेस, अंतरिक्ष में फैल गई. स्पेस, दिस एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज बिग बैंग थियरी एंड हाउ इट हैपेंस, यूनिवर्स फॉर्मेशन. नाउ we'll see celestial bodies. In general, all natural bodies that exist in universe are known as celestial bodies or heavenly bodies. As you can see in the picture, our solar system, planets, asteroids, meteoroids, which are between the Mars and the Jupiter, there is one line of asteroids, dwarf planets are there. So a celestial body can be defined as any natural body outside the Earth's atmosphere. Celestial bodies or heavenly bodies are object कोई वस्तु, कोई something that is known as object, are objects in space such as the sun, moon, planets and star. A natural celestial body, object visible in the sky such as a star, planet, natural satellite, asteroids, comet, the moon or the sun, they together form celestial bodies.
जो बॉडीज ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में फैली हुई है वो celestial bodies. Now this is classified, we will see small introduction with the help of picture also. Stars are spread in the space, as you can see, bright in color, dotted point, stars. So stars are giant ball, very huge, very big ball of hot gases that can produce their own light. They are hot, that is why they are spreading energy in form of light. Stars give out energy by converting hydrogen gas into helium in their cores. Core is the center point, middle point. So conversion of hydrogen into helium produces energy. स्टार गर्म है, चमकता हुआ तारा इसलिए दिखाई देता है बिकॉज उसमें एक्सप्लोजन होता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में बदलती है, बिकॉज ऑफ दैट इट ब्लास्ट होता है और एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है और हमें रोशनी दिखाई देती है। Stars are gigantic in size and have immense gravitational attraction. Stars का जो साइज है, उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा है, gigantic, and have immense gravitational attraction, और उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे कहते हैं ना, अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, वो फोर्स बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बड़ा फोर्स है। द सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार। सन, आवर सन, द सन इज़ द स्टार दैट गिव्स अस एनर्जी एंड मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। सूर्य से हम रोशनी लेते हैं और उसी रोशनी से प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड फर्दर लाइफ एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ, और इस प्रकार धरती पे जीवन चलता है। नाउ विल सी अबाउट प्लैनेट्स। देयर आर 8 planets as you can see in the figure. From the sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets which revolve around the sun. Planets को हम ग्रह के नाम से जानते हैं। Planets are large, almost spherical object. Spherical object गोलाकार, जैसे गेंद होती है, बॉल होती है ना, दैट इज स्फेरिकल, वैसे सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल है ये, हाँ, यहाँ याद रखना। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। कौन? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन। ऑर्बिट मतलब, ऑर्बिट इज द पाथ where the planets revolve by following same path. Okay, so orbit is the path. Planet move in fixed orbit around the sun. There are 8 planets in the solar system. Planets may be made up of rocks, metals and gases like hydrogen, nitrogen, methane. Planet रॉक्स के, पत्थरों के बने हो सकते हैं, गैस के बने हो सकते हैं, या धातुओं के बने हो सकते हैं। गैस में लाइक गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड मीथेन गैस। मीथेन गैस इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। द अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट। हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, वो भी एक ग्रह है। वो क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, रिवॉल्व करती है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, एंड इज द ओनली नोन प्लेस इन द यूनिवर्स विच सपोर्ट्स लाइफ। और अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा, इट्स द ओनली वन प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ, जो जीवन को सपोर्ट करता है, जहाँ पे जीवन पाया जाता है।
planets that revolve around other stars are called exoplanets. जो प्लैनेट सन की तरफ रिवॉल्व न करके, सन के चारों ओर चक्कर न लगा के दूसरे स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दे आर नोन एज एक्सो प्लैनेट्स. नाउ विल सी नेक्स्ट इज द सैटेलाइट. सैटेलाइट्स इन हिंदी इट इज नोन एज उपग्रह. Satellites known as upgrah. As you can see in the figure, there are different satellites revolving around in the space. Satellites are objects that revolve around planets. They form the essential part of the celestial bodies. These may be natural origin or sent by human. Satellites may be natural or artificial. Artificial means human made. They revolve. वो क्या करते हैं? वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं. That is why they are known as उपग्रह in Hindi. The moon is a natural satellite of the earth. मून, चंद्रमा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है. किसका? पृथ्वी का. The moon is a natural satellite. Okay, so the moon is a natural satellite of the earth and revolve around it because it is bound by earth's gravitational pull. Gravitational pull मतलब attraction. पृथ्वी क्या करती है? चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्ट किए हुए है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. दैट इज वाई मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. इसलिए क्या है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. द मैन हैज ऑल्सो प्लेस्ड आर्टिफिशियल और मैन मेड सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स टू स्टडी them एंड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. मनुष्यों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया है. किसके लिए? ग्रहों की जानकारी लेने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए और टेलीकम्युनिकेशन सेट करने के लिए. जो हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं. वी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन नाउ डेज. वी आर वॉचिंग मूवीज़ विद द हेल्प ऑफ DTH, with the help of dish antenna. All these are because of the communication, the information which is signals which are passed from one place to this space, and from there that satellite these signals are passed to the other place on the earth. एक जगह से दूसरी जगह तक जो सिग्नल्स है वो भेजे जाते हैं सैटेलाइट के माध्यम से. वो हमारे पास, हमारे घर तक पहुंचते हैं, हमारे मोबाइल टावर्स तक पहुंचते हैं, हमारे डिश एंटीना तक पहुंचते हैं. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मेक phone calls and we can see the movie on DTH like Tata Sky etc. Nowadays we are using at our home. So this is because of satellites which are revolving around the planets. Okay, now after this we will see about the comets. Comets are known as Puchhal Tara. As you can see in the picture, there is a tail like structure. Okay, comets, these are very small chunks of ice and rocks that come from the outer edge of the solar system. When its orbit brings it closer to the sun, the ice on them vaporizes, creating a beautiful tail behind them. ये बहुत ही छोटे होते हैं. ये these are made up of rocks और ice. ये पत्थर या बर्फ के गोले के समान होते हैं. But when they came into the contact of solar energy और solar heat, सूर्य की रोशनी और गर्मी में जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं, they burst out, they catch fire and they burst out. In the case of stone, पत्थर होने की स्थिति में वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जलने लगते हैं. ओके, सो they burst out
वेयर एज द आइस, दे बर्फ के जो गोले होते हैं, दे स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड वेपराइजिंग, एंड दिस वेपर्स और दिस स्मोक इज लुक्स लाइक अ ब्यूटिफुल टेल बिहाइंड देम. सो दिस वॉज comet. I hope I am able to clarify things in Hindi and English both. Now after comets there are asteroids. Asteroids commonly known as Kshudra Graha. If you can see in the picture, the stone, they are dead stone, they are broken down into pieces. These asteroids are formed and they are irregularly shaped. Irregular shape is there, made up of metals and minerals that orbits the sun. They are also following the same path, orbiting around the sun. Most of them are found between Mars and the Jupiter in an area known as asteroid belt. As you can see, one second, let me show you asteroid belt in the figure we have seen here. Now if you see beta, Mars and Jupiter, between these two planets there is a asteroids belt. You can see dotted line over there. So many asteroids are there, they are also orbiting in the space. Okay, one second. Okay, so most of them are found between Mars and Jupiter in an area known as asteroid belt. Now we'll see meteors and meteoroids. Ulka Pind. If you see in the picture, these are the rocks which formed irregular shape. Now we'll see something more about them. These are objects from space that enter our atmosphere as they are pulled by Earth's gravity. ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ये ऐसे रॉक्स हैं, प्लान रॉक्स, हाँ, वी कैन से ऑब्जेक्ट और रॉक्स विच आर कमिंग फ्रॉम स्पेस ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी. जो पृथ्वी है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो रॉक्स, जो छोटे छोटे पत्थर इरेगुलर शेप के हैं, वो क्या होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, हमारे वायुमंडल में चले आते हैं. पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही वो इंटर करते हैं, दे बर्न, यूजुअली आर स्मॉल एंड बर्न अप in the atmosphere as they enters the earth. This creates streaks in the sky as through a star has fallen. और हमें ऐसे लगता है कि कोई तारा टूट कर गिर रहा हो, बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, आग के कारण ऐसे लगता है कि कोई टूटा हुआ तारा धरती की तरफ, इट इज फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ. दे आर कॉमनली कॉल्ड शूटिंग स्टार, टूटता तारा. If a meteor is large enough, it can reach the ground and creates a crater. Crater खड्डे, गड्ढे जिसे हम बोल सकते हैं क्रेटर. अगर मेट्योर बहुत बड़ा है तो ही वो अर्थ सरफेस को टच करता है, पृथ्वी पे गिरता है. अगर मेट्योर का साइज छोटा है, इफ मेट्योर साइज इज not very large enough, then it will burst out completely in the atmosphere of earth. Such objects are called meteorites. Okay, dear students, now we'll see galaxies. As you can see in the picture, Galaxies are large group of stars held together by gravity. As we have seen, as per the Big Bang theory,
clumps are formed, and these clumps are form galaxy due to Earth's gravitational pull or solar system's gravitational pull. The sun and the solar system is part of a galaxy known as Milky Way. In Hindi, this is known as Akash Ganga. Other galaxies are usually so far away that they look like stars in the night sky. The Andromeda galaxy and the large Magellanic Cloud are galaxies that can be seen with the naked eye on a clear night. Now these are the two galaxies, Andromeda and Large Magellanic Cloud. These can be seen with the help of naked eye. We don't want any telescope to see these galaxies. Now we will see constellation. In Hindi, constellation is known as Tara Mandal or Nakshatra Mandal. Like you can see, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Scorpio, Libra, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Now we'll see the definition. Constellation is a name given to a group of stars. Stars in the sky that make up a certain pattern. They form certain pattern. एक श्रृंखला बनाते हैं, बहुत सारे तारे मिलके एक श्रृंखला, एक पैटर्न. अगर हम लाइंस को ड्रॉ करें, उन सबको मिलाएं, एक इमेजिनरी लाइन, एक मानी हुई लाइन ड्रॉ करें, तो वी विल सी डिफरेंट पैटर्न्स like Libra, Scorpio, etc. They form a certain pattern which is imaginary. When the sky is clear, these stars can be seen from Earth without the use of a telescope. Now we will see about sun. The sun is passing heat energy in form of electromagnetic radiation towards the earth. These radiation are known as solar radiation. Now very important fact that sunlight reaches the earth in 8.3 minutes. This is your GK question also. Now we will see about the sun. The sun consists largely of hydrogen gas. Its energy comes from nuclear fusion. Fusion means getting together, mixing together. When two things mix together, an energy is evolved is known as nuclear fusion. Here, nuclear fusion of hydrogen gas to helium, it forms energy. It blasts and it forms energy. The sun is a hot, as you can see in the figure, really hot, but all of the heat and light coming from the sun comes from the fusion process happening deep inside the core of the sun, deep inside the core of the sun, center of the sun, where pressures are million of times more than the surface of the earth. वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. कहाँ पर? कोर में, सन के कोर में. And the temperature reaches more than 15 million Kelvin. Kelvin is the unit to measure temperature. Degree Celsius and Kelvin, these are the units of to measure temperature. Now we'll see nature of the sun. At the center of our solar system is the sun. Around the sun, many planets and asteroids revolving there.
At the center of our solar system is the sun, which is a typical medium sized star. Sun is a star and it is composed of, made up of mainly hydrogen, that is 73% by mass. 73% is the hydrogen gas and 23% helium, and the rest is the other elements. The sun emits radiation of almost all forms found in the electromagnetic spectrum. सन क्या करता है? लाइट्स को इमिट करता है, स्प्रेड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म्स में. नाउ we will see structure of the sun, how it looks like. So we can see core in the center, CORE, core, where nuclear fusion occurs. After core there is a radiation zone from where the light came out in form of electromagnetic waves. After radiation there is a convection zone which passes heat energy towards outside, and after convection zone on the left hand side, photosphere, photo means light, part of atmosphere we see. After photosphere there is a layer of chromosphere. Chromosphere is orange red layer of the atmosphere, thousands of miles thick in nature. After that we can see corona. This is not virus, this is corona. Corona is the uppermost part of the atmosphere, millions of miles thick in nature. So this was the sun from inside and outside. Now fusion, you can see hydrogen gas molecules, they unite together, they fuse together, they mix together, and they blast, which gives out energy. जब hydrogen gas molecule they unite and they blast, they give out energy, as you can see in the picture. They also unite further and gives out helium gas. The sun, the heart of our solar system, is a yellow dwarf star, a hot ball of glowing gases. Now in the picture shown here, different colors of the sun is shown. This is a picture which is taken by the NASA observatory. This sequence of images shows the sun from its surface to its upper atmosphere, all taken at about same time. This picture was taken on October 27, 2017. Image taken with the help of NASA Dynamic Observatory, Solar Observatory, and these were the colors, these were the different forms of sun. Now sun is the center of our solar system. All of the planets move around the sun. The sun is actually just a star. The core of the sun is 27 million degrees Fahrenheit. Very hot ball of energy. 8 planets move around the sun. We call that an orbit. The planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Lots of smaller worlds orbit the sun.
Pluto is a dwarf planet beyond Neptune. After Neptune, there is one small planet, dwarf planet, that is known as Pluto. There are many asteroids and comets that go around the Sun too, as we have seen already. Its gravity holds the solar system together, keeping everything from the biggest planets to the smallest particles of debris into its orbit. Gravity exerted gravity Gravity exerted by Sun keeps all the planets moving and revolving around the Sun into the space. Electric currents in the Sun generates a magnetic field that is carried out through the solar system by the solar wind. After the energy generation with the help of hydrogen gas and helium gas inside the core of the Sun, it forms a magnetic field and throw out solar wind outside. A stream of electrically charged gas blowing outwards from the Sun in all directions. Solar system exerts energy. Sun, after blasting this hydrogen gas and helium gas, it gives out energy, and this energy is thrown out in all direction towards outward. The connections and the interaction between the Sun and the Earth drive the seasons, ocean currents, weather, climate, radiation belt and aurora. The connection and attraction between the Sun, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, जो दोनों एक दूसरे पे जो बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इस वजह से पृथ्वी पे मौसम बदलते हैं. देयर आर हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द ओशन. समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, गर्मी और ठंडी का एहसास हमें होता है. Though it is the special to us, there are billions of stars like our Sun scattered across the Milky Way galaxy. सूर्य के समान ही दूसरे तारे भी इस ब्रह्मांड में, इस आकाश गंगा में बिखरे हुए हैं. So, my dear students, today we will stop here. In this lecture we have seen about the Big Bang theory and other planet in general, small introduction of planets, comets, galaxies, etc. we have seen, and we have also seen the Sun. Now in next lecture we will see more details about different planets and dwarf planets. Thank you class.